Yeah, To all the participants. I'm I, audible. Harkare, welcome you all on the third day of AICTE ATAL Academy sponsor online FDP on emotional intelligence, organized by Marathwada Mitramandal College of Pharmacy. Today's resource person is for the first session is Honorable Dr. Anuradha Harkare, a founder of Mind Catalyst Study and Counseling Center Pune. Madam has completed her graduation in Counseling Psychology from Pune University and doctorate from Nagpur University. Playing a role of psychologist and counselor, Madam is very much passionate about the spreading mental health awareness among the stakeholders. Madam conducted various workshops for the students, teachers and parents and worked as a freelance and visiting counselor at various institutes such as Mumbai University, MVML Sakhan, CME Pune, Yashoda and many more. With more than 32 years of academic and corporate experience, she has also authored books like Pulla Sugandhamatisa, which is based on the interview of successful personalities. A weekly column of Motyache Balpar on Zee Marathi Disha is also on her credential. With this brief introduction, I request Honorable Dr. Anuradha Harkare Madam to kindly guide us on the managing emotions and building relations. Thank you. Madam, can you share your PPTs? Yes, sir. And before I start, I will just share it first and then just wait. Can you see that now? Yes. Yes, sir. It's Okay. visible. Okay. Because probably I'll just take 1 or 2 minutes to get that technicalities right. Okay. Because I think now the full screen you can see, right? Yes, ma'am. Okay. So before I start and before I forget, let me thank Marathwada Mitramandal Managing Committee and Pharmacy College to consider me worthy to share my whatever little bit information knowledge I have regarding this emotional intelligence and sharing with you all. So thank you once again, especially Kavita ma'am. And let me start with this. And probably my time is up to, I'll take till 11:50 or so, 11:45, then 15 minutes we can have the question answer sessions if people have. Is it okay, sir? Yes, no problem. Okay. So I think all the participants are mute, but if I ask someone, then please unmute yourself and we will make it maximally interactive, whatever is possible. Yes, no problem. Yeah. Now, today's whatever topic we are going to discuss with each other is managing emotions and building relations. Now, before I start, let me ask any one of you can unmute and tell that do you think that managing our emotions, are we going to build relations? I mean, building a relation or harming a relation, it depends on emotions. Do you think this way? That way. Yeah. So if we really, I mean, what we call as कि शब्द जो है हमारे जो एक बार निकल गए तो वो कमान की तरह तीर से जो जाता है तो वापस नहीं आ सकते. And whatever harm we make it by talking to someone or maybe reacting in a wrong way, showing our emotions in overwhelmed and a little bit harming way, hurting way, that can be undone. That can't be undone. So whatever we can reduce the severity, but एक बार वो हो गया तो हो गया. So our main focus will be we have to change completely ourselves. So slowly with practice it may happen that probably when we react to someone, we usually do not respond, we react. We'll see that. And after that we regret. Most of the times we regret that ऐसे मैंने बेकार कह दिया, I would have not talked like this, I would have done in a better way, I would have told to this person in that way, and so on. We regret quite a lot. So with practice, I'm sure that if you practice managing your emotions, little bit you will be getting that, I was just wrong. But then with practice, you will understand, now I'm going to react in the wrong way. And then next, you will react in the right way only. So it's a process and it continues till we never get the expertise in that, So it's a process. It's not something that we have managed our emotions and now we have got the destination. It's not like that. It's a process. So let us see what it means and what do you mean by building the relation and all,
most of the times people, I mean, usually the ladies, wives, I can say, that they complain that husband or children or whatever, they do not understand themselves, you know. मुझे कोई समझ नहीं पाता है मैं क्या हूँ. And they are all the time complaining that the better halves, उनके जो husbands है, वो usually कुछ तरीके से समझ नहीं पाते हैं emotions. And that to some extent it's true that if you you know, you just visualize the scene long back in the sense thousands of years ago, when we used to stay in, we in the sense human beings used to stay in woods and jungle and caves and all. So the main job of that male being masculine to hunt and get the something to eat, isn't it? So that, sorry, yeah. So that was his main job. So hunting and getting something to eat was the main job of that person, and that's why he had to focus on that prey. उसको पूरा वो शिकार पे एकदम फोकस करके, तो whatever you know distractions are there apart from that prey, apart from that shikar, he ignores it because he has to completely focus on that particular deer है या जो भी कुछ है, whatever animal, he is completely concentrating on that. So he has, I mean, hardwired to ignore what is happening, you know, in surroundings when he is focused at one point. And this is the reason that they are not that much, you know, aware of the things. It's a simple reason. It's not because they are doing it intentionally. And secondly, on contrary, the women, the females, being the one who can give birth and conceive and give birth, she is taking care of home, the nest, the children, and she is all the time worried कि कोई जंगली जानवर है क्या, कोई थ्रेट है क्या, माय चाइल्ड जो है उसको कुछ खतरा तो नहीं है. So she has to all the time keep her antenna aware, active, to pay attention to the surrounding, and this is the reason that she can pay attention to the many things at a time, because since evolution we have been hardwired like that. But what happened due to that? So many aspects are there that women can understand. She can understand whether कोई smell आ रहा है क्या animal का, या कोई किसी की आवाज आ रही है क्या, मेरे बच्चों के facial expressions कैसे हैं, and she has started inculcating that type of skills. And that is the reason that men, they are usually they are not able to, you know, express जितना women करते हैं. So of course there are exceptions, but on an average males are little bit less expressive, you know, from women. I mean, in simple words, if I can say that men's are action oriented and women's are emotion oriented, simply. But due to that, what happens that whatever expectations this lady is having from husband, and then that's why he has taken the answer. You know, you always complain that I don't know how to show my emotions, so I have made these signs. And even after that, he has made only 2 signs, happy and sad. That's it, because their skills are not that much. But the point is, as long back again, Aristotle has told that anybody can become angry. It is easy. But to be angry with the right person, to the right degree, at the right time, for the right purpose, and in the right way, this is within something not in our power, we can say, and that's why it is not easy. So if you just go, you know, and all the positive emotions, absolutely we don't have any issue with it. I mean, we don't go and go for a class for anger management, like happiness management. No. We have to understand how to handle the negative emotions. Most cases we have to handle negative emotions. So Aristotle ने जो कहा, ऐसा सब disturbances are there, right? Okay. So as what Aristotle says, the problem is not with the emotionality. Problem is not with the emotionality, but the problem is with the appropriateness of the expression. Are we going to express it appropriately? Then it's perfectly fine. And that is the base of emotional intelligence. We have to know, we have to understand the appropriateness. So कोई बंदा इमोशनल इंटेलिजेंट है, इसका मतलब ऐसे नहीं कि उसको कोई दुख नहीं होता है.
इसका मतलब ऐसे नहीं कि उसको नेगेटिव इमोशंस कभी वो फील ही नहीं कर पाता है, उसको आता नहीं. द पॉइंट इज व्हेन द पर्सन वी कॉल एज इमोशनल इंटेलिजेंट, ही हैज acquired the skill of expression of it appropriately, and even he can understand other better. Now, as it is third day today, I am not going to repeat. I think you have already done with the first 2 days what is emotional intelligence, और किसने ये निकाला और किसने popularize किया, and what are the domains. But I am not going to be in that details because I am sure that all of you know about it. And even yesterday, ma'am told that you have already been told about it. So the point is, we have to understand how to express emotions appropriately and how to understand emotions from the someone who is in front of us. The emotions coming from that person, whether they are not appropriate, then how to handle that. That's what the point is. So we have to be appropriately expressive, and we have to understand the unappropriateness of others. That's what the emotional intelligence is. Now, why we have to understand this? Because again, intelligence, it just can come to nothing when the emotions pull me. जब वो इमोशनल का एक रश हमारे दिमाग में आ जाता है, तो इंटेलिजेंस जो है, सो कॉल्ड इंटेलिजेंस, इट जस्ट कांट डू एनीथिंग. I don't know whether you have gone through with this concept that 6 seconds. So जब भी हम इमोशनली टर्बुलेंट होते हैं, whenever we are emotionally overwhelmed, whatever adrenaline rush and all the neurotransmitters, they are running, and they just hijack that amygdala, the brain part. But that rush remains there for only 6 seconds. So if we take a break of 6 seconds, our that wrong expression can settle down. But that is something, it's a separate point to be discussed. So the point is, EQ is far, far, far required than IQ to be successful in the professional as well as in the personal life. आप IIT में फर्स्ट रैंक होल्डर हो, आप MIT में पढ़ा रहे हो, आप मगर घर आके यदि आप if you are fighting with your wife, I think that IQ is of no use because you don't understand how to deal the life, isn't it? So that's why we have to understand it. I think this much is enough. Now, one more thing I would like to ask you to do as an activity, because it's a virtual and I am not sure that how many of you are doing it or would like to do it. I just would like to ask you, all of you, to write down whatever emotions, the names you remember. So I'll just take one few seconds, we can have 1 minute, and you just write down whatever emotions you remember. Write it down. Just write it down. I will wait for 1 minute. A few seconds I will wait. All of you are with pens and notepads and all. So write down whatever number of emotions you remember. Name them. Yeah, anger, sadness, anxiety. Bhokre sir has given it. Yes. Anger, jealousy, happy, right? Okay, so I assume that most of you, frustration, bliss, good, fear, happy. Okay, now whatever just names I took just now, because I read it, insecurity. Yeah, so whatever names I read, have you understood that out of all these, only 2 or 3 were positive, and most of the other emotions which we remember are negative? So this is what our, we are hardwired to think, that first we think of negative, not first we think of intentionally, but it comes in our mind because we are surrounded by that type of emotions more, because worried for it. We have frustration, we have fear, we have sadness, we have regret, guilt, and so many things. Okay. Now, why we have to understand this? Why we have to understand to intentionally focus on positive? Because it is affecting our life. So जो हमारा heart है और हमारा brain है, they are extremely connected with each other. Obviously, it's one person.
So whatever I'm thinking, it immediately reflects on my body. मैं बहुत बार एग्जांपल देती हूँ कि if you just think of chaat and pani puri and imli and all, your mouth starts watering, you know. So just a thought, you are changing the physiology. Salivation चालू हो गया, so you have changed the physiology. So one thought gives the change in the body. So if you are continuously thinking of sadness, stress, fear, tension, guilt, and frustration, then how it is possible that it is not going to affect your body? It affects, but the sad part of it is we get the notification of it when there is a major change in the body. When body says कि no भैया अब रुको, अभी अब तकलीफ होने लगी है, मुझे हार्ट अटैक आएगा, तब जाके हम सोचेंगे कि अरे ब्लॉकेज निकले, अरे प्रॉब्लम आ रहा है. So that's why we have to bother, because thinking is going to change my physiology a lot. Okay. Now, why we are worried for the relations? This is what we have talked about, the emotions, that we have to understand emotions and we have to talk and think positive. That's the reason, because it is going to settle down the cortisol and adrenaline, and we are going to increase the dopamine and oxytocin. I may not talk about all these engineering and pharmacy people, they are all know about it. But why we are talking about relations? If you have seen this movie Castaway, it's one of the beautiful movies, you know. And the person who is just, by accident, he just gets on one island, one no man island. And then he just gets weird, he gets crazy. और उसको कुछ वहाँ बीच पे एक मिलता है ऐसा flattened football, उस अपने हाथ को खून से रंगा के he just make an impression of it and he keeps on talking to that football, you know. Because we cannot live on island. Because we need people. We are social animals. And for my benefit, their existence is important in my life. Their existence in my life is for my benefit, and hence I must protect their existence. And that existence I am going to protect by nurturing the relation. I cannot ditch them, I cannot hurt them. In the sense, it may happen unintentionally, unknowingly, but if I take care, I can avoid, you know. So this is their existence, and maintaining the relation, nurturing the relation is for my benefit. So at least from that selfish point of view, we can maintain relations, you know. So that is what is the need. Now, I just will tell you one story. One New Way school in California, long back. It's a small town, and उसमें एक school था, and they started applying a beautiful activity every day. You know, now why they started? Because if you just remember, you know, कभी आपके छोटे बेबी को या किसी आपके पहचान वाले को छोटे को कुछ परेशान होता है, व्हाट वी से कि अरे आपको गुस्सा आया क्या, आपको गुस्सा आया क्या? क्योंकि हमने गुस्सा ये एक ही इमोशन समझा है. ओके, बट वी हैव नेवर टॉट दैट चाइल्ड दैट देयर आर नंबर ऑफ शेड्स ऑफ दैट गुस्सा, एंड दैट शेड्स हैव डिफरेंट सिवियरिटीज, एंड दैट्स व्हाई we have to make ourselves as well as we have to make our children emotionally literal. उनको उनकी जो इमोशनल लिटरेसी है उनको लिटरेट बनाना पड़ेगा. वो इमोशनल लिटरेसी जो है वो उनको बतानी पड़ेगी. एंड दैट्स व्हाई दिस स्कूल हैज स्टार्टेड एक्टिविटी that when the child is in the classroom while taking their roll call, what they say, for example, like Anuradha. So the teacher will take the name of Anuradha and I will say, I have to tell my emotion ranking on 10. Okay? So I will say, Anuradha, yes ma'am, this is 10 because it's my birthday today. Extremely happy. Or Anuradha, yes ma'am, I am 8. My tiffin carries something which is of my favorite dish. Or Anuradha, yes ma'am, I am 3 because morning my mother scolded me. You know? So where I stand on that literal emotional literacy model or emotional, we can say, severity, if you understand that, then your expression comes out very properly. If your emotionality is less, then you have to express in a low way. If it is higher, then you have to tell in a higher but in a better constructive way.
So this New Way School, California, you can look for it on Google, and they are running beautifully this activity, emotional literacy, emotionally intelligent. They are making their children. And what about relations? जो भी relations हमारे आजू बाजू दिखते हैं, we have only three kinds of relations. One is our family, other is our friends oblique social. I mean, other than professional, because professional के साथ हमारे friends जो है, उनकी friendship और friends के साथ की friendship अलग होती है. So we have to maintain three types of relations only: family, friends, and social, neighbors and all. एंड इसमें हमारी काम वाली बाई, हमारा साफ सफाई करने वाला, वो भी आएगा, एनीवन, एंड प्रोफेशनल. एंड फाइनली इमोशनल इंटेलिजेंट पर्सन और इमोशनल इंटेलिजेंस helps you to commit to nurture the whole individual. We will come to that at the end. Okay, so here we will just go through all this in a little bit details. Now, when we say we have to maintain a successful relationship, what do you mean by that? When we say that the relationship is successful, can you define it in your own way? Anyone? I have just written it, my views, but you also can share your thoughts. What do you mean by a successful relation? When you say that I'm a successful husband, successful father, mother, wife, or colleague or boss, what do you mean by that? It means that we have good relationship with others. Okay. So, positive relationship. Yeah, positive relationships. We are in harmony. Yeah, we help each other. We understand each other. Very true. Very true. So, successful relationship, again, it's not the destination. It's a process. It's a continuous process. And it's the byproduct. It's the product. It's the side product, we can say, of creating and keeping a constant and healthy connection with other people. आप शायद अभी ये कोविड सीन में बहुत लोगों को एम्पैथी इज देयर, दैट्स वेरी ट्रू. इन कोविड सीन में बहुत लोगों ने शुरू के जो एक दो महीने थे, जब ऑल ऑफ अस वी वर जस्ट नॉट डूइंग मच थिंग, अभी वो वर्क फ्रॉम होम एंड यू हैव टू लिव विद कोरोना, उसके बाद तो रेगुलर रूटीन चालू हो गया. बट शुरू के कुछ एक दो तीन हफ्ते में यू मस्ट हैव रियलाइज दैट ऑल ऑफ अस वी कॉल्ड अवर ओल्ड फ्रेंड्स एंड अवर बहुत कहीं जो निकल गए थे हमारे दिमाग से, उनको फोन करके फिर से बात करके. सो वी अगेन इग्नाइटेड दैट पर्टिकुलर रिलेशन बिकॉज वी स्टार्टेड अगेन keeping a good connection with them. And now you can see that बहुत सारे लोग ऐसे वो कोविड में एक दूसरे से पहली बार मिले virtually, and now we are in good touch with each other. So a successful relation is that. But why we need to have in-face person-to-person relation, not only virtual? Because virtual में, for example, I am talking to my husband like this on distance relation में, I can just say कि I don't have and I can shut down my laptop. So जब भी मुझे चाहिए, I can shut down the conversation. But that we cannot do in face to face, and that's why we have to make our children aware of it, because nowadays they are more comfortable with virtual relation than in face. हमारे घर में कोई मेहमान आते हैं तो बच्चों के चेहरे पे जो awkwardness आता है, you can read that. They take their phones and they sit in the corner. If possible, they go in their room. They want to avoid people. Why? Because they are not that much comfortable with person-to-person in-face relation. And that's why this is our responsibility to make them aware of it. So those who are reaping the successes in life, जो लोग बहुत successful है, happy है, कहाँ पे? अपनी personal life में, professional life में, दोनों में. What they say? The reason behind that is they are successful in maintaining the managing healthy relationship with their family as well as in profession. Okay, so this is what importance of successful relation is, because that is what going to make you successful, nothing else. As a successful human being, as a successful person in professional and personal life, you have to be successful in maintaining relation. Then only you will be successful. This is what the gist we can say. Okay. Now, of course, the first emotion, what we understand from in our life when we take the first breath, the
first emotion we have is of love, isn't it? Someone takes us, someone holds in the hands. So that is the touch. This is something I experience it. And then slowly in my family, I get nurtured. And that's why I have used this term. Usually, a few things of it I do not use when I am not talking to technical people. But because all of you understand this, so relationships must be forged in family crucible. It's very important. मतलब जब भी हम कहते हैं कि भाई आप बड़े होके बच्चे ऐसे कैसे करते हैं, जब तो एक्सट्रीम जब हम सुनते हैं कि किसी ने सुसाइड कर लिया, दिस एंड दैट, यू नो, दैट टाइम, देन वी रियली वंडर दैट हाउ दिस पर्सन इज, किसी को कोई समझा कैसे, बिकॉज वो कोई सुसाइड करता है वो एकदम मैंने आज सुबह डिसाइड किया और मैंने सुसाइड किया, ऐसे होता नहीं है. दे बिकॉज नो वन वांट्स टू डाई, एवरीवन वांट्स टू लिव, दिस द फैक्ट. बट उसका जो लाइफ का फ्यूटिलिटी है, लाइफ का जो उसको एक बहुत हेल्पलेसनेस और होपलेसनेस लग रहा है, वो अपने बातों में बहुत बार क्लूज देता है अपने नजदीक वाले लोगों को, फ्रेंड्स को, बट वी फेल टू अंडरस्टैंड दैट. तो एज अ पेरेंट, एज अ फैमिली, वी मस्ट बी अ सिंक. हमारी फैमिली में हमने एज अ सिंक, एज अ पेरेंट काम करना चाहिए कि जो भी आपके मन में कचरा है हमारे सिंक में आके डालो. लेट देम अंडरस्टैंड कि यहाँ पे कुछ है जहां मैं कुछ भी डंप कर सकता हूँ. सो दैट अश्योरेंस, when it will be there, when you will validate their all negative emotions also. We have to validate their negative emotions. And hence, as a parent, if you are emotionally intelligent, then you will be of enormous benefit to everyone in your family. And it's a good that I'm really happy to see that Marathwada Mitra Mandal Pharmacy College has taken this initiative, because everyone is talking about this कि अभी COVID है, stress कैसे करें और stress कैसे handle करें. Why you are talking about only COVID or stress? Why not to make the person completely emotionally intelligent? So this is like what I will, I mean, ये मुझे ऐसे लगा अभी कि किसी hungry person को if you give a fish, then it will fulfill his needs that day. If you give fish another day, it will fulfill his hunger second day. But if you teach him fishing, he will be independent. It's like that. So अभी stress कैसे handle करना है कोविड में, anxiety कैसे handle करनी है, इसके बजाय हम सबको emotionally intelligent ही बना देते हैं. It will be helpful for all the time. It's really nice initiative the college has taken. Now, why we have to worry? You know, because you know this is a faculty development program, so I am little bit technical और थोड़ा academics के side में ज़्यादा जा रही हूँ शायद से. And why we have to worry and आज क्यों ऐसे करना है? So the point is, हजारों साल पहले जब इवोल्यूशन की प्रोसेस में हम लोग थे, तो इमोशंस हमारी थी, वो इमोशंस कैसी थी और आज हमारी कैसी है. तो आज हमारी इवोल्यूशन की इमोशन बदल के has come to emotions of civilization. So what is the difference in that? You know, you can see the light, the change in the light you can see, and we have to change the emotions also. Just 1 minute. Yes. So then and now, what is the difference? इवोल्यूशन तो हो गया, लाइफस्टाइल बदल गई, हम बदल गए, मगर क्या हमारी इमोशंस बदले? लेट अस सी दैट. देन इवोल्यूशन के समय इट वाज अ बायोलॉजिकल चैलेंज. यू नो, मेरे पीछे कोई शेर लगा है, कोई स्नेक है, सामने कुछ दूसरी वाइल्ड पीपल, दूसरी गैंग है. सो चैलेंजेस जो मेरे थे वो मेरे सर्वाइवल के थे. देयर वाज नो अदर यू नो ऑप्शन. नेचुरल कैलेमिटीज थे, वाइल्ड एनिमल्स थे, अदर मैन के गैंग थे. सो दिस वाज चैलेंज टू माय सर्वाइवल. एंड व्हाट वाज द अल्टरनेटिव फॉर मी? आइदर टू फाइट or to flee or to freeze. And I have to choose the correct option that time. मैं कोई स्नेक मेरे सामने आता है तो मैं सोचूंगी नहीं वहां पे कि अरे ये तो पॉइजनस नहीं, मैंने सुना था डिस्कवरी पे, ये क्यों काटेगा? That is not the time to think of that. So I have to take a correct choice that time. There is no second chance. So I have to react. You know, this is the major difference in biological challenges. That time I had to react.
But now, what has happened? Now the challenge is not biological. अभी मैं बाहर निकलती हूँ तो मुझे कोई वाइल्ड एनिमल्स है या दूसरे कोई मुझ पर हल्ला नहीं करेंगे, अटैक नहीं करेंगे. So what are the challenges nowadays? Emotion of civilization, EC. The challenges are psychosocial. ये लाइफ और डेथ की सिचुएशन नहीं है. So मेरा लॉन्गर रिस्पॉन्स टाइम है. I can think. I have number of alternatives available. So it is necessary to be logical. और ये डिस्क्रीट था ना पहले, yes or no, मारना है या मरना है, यही ऑप्शन था पहले, मगर ऐसे नहीं है अभी. आई हैव अ कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम एंड दिस कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम के कारण मैं अभी करेक्शन भी कर सकती हूँ. सो आई कैन रिस्पॉन्ड. सो इफ यू आर रिएक्टिंग देन प्रोबेबली आप अभी वो इवोल्यूशन के ही स्टेज में हो, सिविलाइज्ड हुए नहीं, और अभी आप रिस्पॉन्ड करते हो, देन वी कैन से कि यस अभी हम सिविलाइज्ड हो गए हैं. Isn't it? So इमोशन ऑफ इवोल्यूशन से हमें इमोशन ऑफ सिविलाइजेशन में जाना है. तो जो हमने देखा कि पहले ब्लैक एंड व्हाइट, गुड और बैड, बाइनरी था, यस और नो, एक्यूट और सीवियर. अभी वैसा नहीं है. अभी आई हैव नंबर ऑफ शेड्स. आई कैन हैव some regulation on my feelings, my thinking. I can think. Cognition मेरा बढ़ गया. So all these things, they are helping me to now respond, and this becomes my responsibility. Okay. So when we say that the person is emotionally intelligent, तो उसमें civilized emotion देना जरूरी है. But the point is कि comparatively evolution से civilization young है. और जो बायोलॉजिकल चेंज का या जो इवोल्यूशन के टाइम का हमारा थिंकिंग था, चैलेंजेस था, वो कहीं ना कहीं इनग्रेन हो गए हैं. एंड हेंस द मेजर मिस्टेक वी मेक इज, जो हमारे साइको सोशल चैलेंजेस है वो हम बायोलॉजिकल लेते हैं. आई विल गिव द एग्जांपल. इफ लेट अस से योर बॉस शाउट्स एट यू और योर चाइल्ड थ्रोज अ टैंट्रम इन मॉल. आप मॉल में उसको लेके गए, छोटे बेबी को आपके, और दुकान में कुछ मांग के वहीं पटक के वो जमीन पे रोने लगा. We react. Why? Because we are taking that psychosocial challenge as a biological. Do or die वाला हमें सिचुएशन लगता है और वो एकदम हम कुछ ना कुछ एक्सट्रीम रिएक्शन देते हैं. बहुत एंगर में जाएंगे, चिल्लाएंगे, शर्म आएगी. Because we are considering that as a biological challenge. That we have to understand very clearly that these challenges are psychosocial, civilized, thinking wale. That's why we have to think. Before I just show this, I'll have to minimize. I will just ask that do you have anything to ask or share or some doubts we can. Hello, ma'am. Yeah. Monica this side. Yeah. Like you said, maybe there was some connectivity problem. Maybe I missed that. But I cannot hear, ma'am. like when you were talking about emotional literacy, you Okay. said that as a parent, we need to validate the negative emotions of children. Yeah. So what do you mean by this? Like I didn't understand this. How can we validate negative emotions and what is the use of them? Yes. Ma'am, in the later part there is some parenting style का ये है, but मुझे actually एक अपना था video, I am not able to show it. I just I wanted to show one एक video मुझे दिखाना था, but I'll see. We will just finish it and I think it's possible I will do it at the end. मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये. Ma'am, I will come. Monica, I will come to you. Sure. After. Okay. Yeah. Sure. Yeah. So I will come to that. But those videos, I will take time. If we have time, I will definitely show it and share it with you. They are very, gives good understanding of how the emotions can be understood. Okay. Now, emotional literacy, what I'm talking about is
as I'm talking about the spectrum also, I'm talking that it's a continuous, it's not do and die, it's not 0 or 1, it's not good or bad, it's a continuous spectrum, for example. Now you can see this is a Plutchik wheel of emotions, okay. And एक example मैंने यहाँ पे लिया है कि annoyed, frustrated, upset, irate or furious or enraged. I gave the example that if something wrong happens, जैसे our child, क्योंकि हम बचपन से यही सिखाते हैं, तो तुला आपको गुस्सा आया क्या, तुला राग आला का, are you angry? We talk like this. So that's why the child understands that there is only one emotion, anger. But if I am not getting my keys in the morning, let us say, so am I angry? No, I am irritated, I am frustrated, I am annoyed, I am upset. So whatever is happening with me, what type of emotion I am feeling just now, if I am clear with that, it will help me to express properly. So I am just annoyed, I am just frustrated, I am little bit upset, I am little bit irritated, now I am furious and now I am enraged. So this continuous spectrum जो है, that spectrum we have to make our child understand, and that's what the emotional literacy is. Because if you are talking about only one anger, it's one emotion, but now it becomes there are 6 shades of it. So your emotional literacy increases. Let us say if your daughter says her friend has got beautiful dress, branded some costume, some dress, something, and she is jealous. Now, as an emotional parent, you have to understand that jealousy is a mixture of anger and sadness. We do not understand this. We say it's jealous, but what do you mean by that? Jealous is a mixture of anger and sadness. So anger is that she got it, and sadness is I didn't get it. So when you say, are you jealous? Then she says yes. Then you have to ask, of what? Why you are angry? I'm not angry, I'm jealous. Yeah, but jealous is a mixture of anger and sadness. Are you angry with that she is getting it? Then probably that child will understand the emotions better. You know? So you, as an emotional parent, as an emotional colleague, emotional friend, whatever, you're the person, you will be able to clarify the emotions. मैं बताती हूँ कि कोई ब्रेकअप हो जाता है लेटर से एक लड़का लड़की का, एंड लड़की सेज आई हेट यू. If the boyfriend is emotional intelligent, then he will understand that she doesn't hate, she is hurt. This is what we have to understand, because ये theory पढ़ के तो नहीं चलेगा हमें emotional intelligence क्या होता है कैसे होता है. You have to apply it, you have to understand it. So if you are emotionally intelligent, then you will understand that the person is not hating you, the person is hurt, and then now you can work upon in a better way. क्योंकि यदि hate है, ठीक है, I also hate, who cares? But if the person is hurt, then you will think what happened, then why she is hurt. You will take some measure to that. Okay, so this is what our aim is, to be emotional intelligence means what. So this is our aim is. Now when you become emotionally intelligent, this is a beautiful concept given by Dr. Anand Nadkarni, IPH Thane, and he told that all of us, we have to shift our address, we have to transfer ourselves from where we are to the ground floor of Bhavna apartment, you know. And this Bhavna apartment, ground floor, what stays? It's confidence, happiness, satisfaction. Then on third floor, because it's a continuum, on the third floor, it is concern, irritation, sadness, regret. And if you are on sixth floor, then instead of concern, you will become anxious. यदि आपके बेटी ने बोला कि मैं 8 बजे तक वापस आती हूँ और 8:15 हो गए और आपकी बेटी आई नहीं, तो now you are little bit concerned about it. But if you are not emotionally intelligent, you will become anxious. Okay, higher part of it. Concern है anxiety से कम, anger, sadness, depression. So all these things 6th floor पे हम जाएंगे, जा सकते हैं, मगर जाके वापस हमें ground floor पे आने की कोशिश करनी पड़ेगी. Coming through 3rd floor. So यदि आपको लगता है कि मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, just find yourself whether are you on 6th floor or on the 3rd floor. Okay, third, not bad.
कि ऐसा भी तो नहीं होगा ना कि हमेशा कुछ भी हो जाए मैं सेटिस्फाइड ही रहूं, हैप्पी रहूं. नो, these emotions in as validation जो मैंने बात की है, talk to that later. We have to understand that कि थर्ड फ्लोर में भी किसी ने मेरा इंसल्ट किया तो मुझे तो थोड़ा सा तो गुस्सा आएगा ही ना, आना भी चाहिए, isn't it? And of course we survived because of negative emotions only. यदि सब वो ह्यूमन बीइंग पे उस वक्त किसी एनिमल ने अटैक किया और वो ह्यूमन बीइंग को गुस्सा नहीं आया तो शायद मर जाता वो. तो आज हम जिंदा उसी की वजह से है. बट वी हैव टू सी दैट इट वॉज अ बायोलॉजिकल इवोल्यूशन का इमोशन था. तो हमें सिविलाइज्ड इमोशन पे रहना है साइको सोशल चैलेंजेस में. तो जितना हो सके ट्राई टू बी ऑन द ग्राउंड फ्लोर, बट समटाइम्स यू कैन गो टू द थर्ड फ्लोर, बट अगेन यू हैव टू कम बैक. जाके छठवें माले को हाथ लगा के आएंगे मगर छठवें माले पे रुकना नहीं है. वी आर नॉट गोइंग टू स्टे ऑन द 6th फ्लोर. ओके. और एक बेसमेंट भी है कि जो ओवर कॉन्फिडेंस में जाएगा, एरोगेंस में जाएगा, लेजीनेस में जाएगा. सो यू जस्ट कीप दिस भावना अपार्टमेंट इन योर माइंड ऑल द टाइम. और जब भी कुछ डिस्टर्ब होते हैं इमोशनली, आपको लगता है, जस्ट चेक इट विथ योर सेल्फ कि आर यू ऑन थर्ड फ्लोर और ऑन द 6th फ्लोर. Okay, this is what a very beautiful concept, and you can just understand it very well by seeing the picture itself. Okay. Now emotional intelligence, this थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट जो आपने पहले शायद पढ़ा होगा, that's is simple language में कहा जाए तो it is understanding self and others. That's it, nothing else. And it was given by Mayer and Salovey, but it was popularized by Goldman, who was a journalist. Okay, and he popularized it, and he made that there are 5 different baskets, we can say categories. उसमें जो 3 है वो मैनेजिंग सेल्फ के लिए है, 2 जो है वो अंडरस्टैंडिंग अदर्स के लिए है. तो सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, मोटिवेशन खुद के लिए, एम्पैथी एंड सोशल स्किल्स बाकी लोगों के लिए. ठीक है. I will not go in details of this because anyhow on this in this 5 days on some of the topics you must have done this or will be doing it. I'll be talking about relations only. Okay. Yeah. So there are 3 relations where we have to use them. One is romantic relationship, second is children and other than romantic, and the third is profession. मैंने जानबूझ के यहाँ पे हस्बैंड वाइफ नहीं लिखा क्योंकि आजकल सब लोग शादी करते ही है, ऐसे भी नहीं है. They can just stay in their relation. So I'm just saying romantic relation. It is applied to anything. I mean in that particular relation. Okay. So if you are emotionally intelligent, do you mind if I slap your phone on my forehead so that at least I can pretend that you are looking at me when I talk? She is so frustrated. कि भाई कम से कम मैं यहाँ पे फोन लगाऊं क्या अभी आपका, तो कम से कम उस बहाने आप मेरे तरफ देख रहे हैं ऐसा लगेगा. And this is a joke actually. This is, but jokes apart, you can see this scene everywhere. आप कहीं भी जाओ, especially hotel, public place में जाओ. The people they are just with each other. They are not together. They are with each other. That means they have come to the coffee shop, but are they together? No. मुझे बहुत बार ऐसा लगता है कि कोई रिलेशन ऐसे होते हैं लाइक रेलवे ट्रैक. दे आर जस्ट गोइंग पैरेलली विथ ईच अदर, बट दे आर, एंड इट्स अ इल्यूजन, कहीं तो भी मिलेंगे मगर मिलते नहीं. दे आर जस्ट रनिंग पैरेलली विथ सेफ डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंसिंग. सो दिस इज नॉट द वे. Emotionally intelligent person will not do that. That's why we have to understand. That's what the maintaining relation is, balancing relation is. So अभी जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस रिलेशंस की, मतलब कल ही एक क्लाइंट मेरे पास आई थी एंड शी वाज सेइंग कि मैम अभी मैंने कुछ ब्रेकअप वगैरह उसका हो गया, एंड शी सेड कि सिंस 6 years इन वी आर इन रिलेशन. मैं बोले देन आई मीन हाउ द डेप्थ ऑफ दैट रिलेशन आल्सो आई मस्ट अंडरस्टैंड. नो, वी आर इन डिस्टेंस रिलेशन. ही इज एट अहमदाबाद, आई एम एट पुणे, एंड ओनली 3 or 4 times वी हैव मेट, अदरवाइज वी जस्ट कीप ऑन वीडियो कॉलिंग एंड ऑल. सो ये जो मैंने हार्ट निकाला है, मतलब ये इमेज है, जो हार्ट है वो भी इतना, देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड और एंटेंगल्ड है. इट्स नॉट गिविंग देम अ स्मूथ रिलेशन, सो दैट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड ईच अदर वर्चुअली, राइट? So we have to tell our children, we have to tell our colleagues, we have to tell our friends
कि एक साथ बैठ के खाना खाते वक्त जो हम गप्पे लगा रहे, जो जोक्स कर रहे, जिस उस वक्त जो हंसी मजाक हो रही है, उस हंसी का कंपैरिजन किसी को टेक्स्ट करके और LOL ओ इतना इसमें नहीं आता है. देयर इज एब्सोल्युटली नो कंपैरिजन लाइक दिस. इन दोनों का कंपैरिजन हो ही नहीं सकता. So we have to understand and make our children more aware that if you are really emotionally intelligent, if you want to become emotionally intelligent, then we have to be with each other जितना possible हो सके. That is something important. Even if because of today's need you have to be in a virtual relation more, then also you have to understand what the emotionality is and what the other person wants to convey to you and what you are conveying to that person. That is also something which is very important. Now if we talk about the relations which are in with our romantic partner, okay, now how we are going to use the emotional intelligence in romantic relationship. अभी emotional intelligence कैसे होना है ये मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि वो ऑलरेडी हो गया होगा. मैं बताऊंगी इमोशनल इंटेलिजेंस है उसका इंपॉर्टेंस रोमांटिक रिलेशनशिप कैसे होगा. तो पहली बात, बिकॉज यू हैव अंडरस्टूड दैट सोशल स्किल एम्पैथी वाला, you have regulated, managed your emotions, you are self aware, so you have to ask every day. This is to be asked every day. Does your lover need something different from you than what you assume? You have to understand that. I mean, आपको ऐसे लग रहा है कि अरे हाँ वो जो पार्टनर है उसको तो समझना चाहिए ना ये कि मैं उसके लिए करती हूँ. But you are assuming that does your partner is in need of something different than what you assume. As an emotional intelligent partner, to build romantic relation, you have to think of this question. Second question you have to ask is, are external influences demanding a change in your respective roles? Me and my husband are great with each other, but are the external influences demanding that change? अरे हम अच्छे हैं मगर सास ऐसी है, हम अच्छे हैं मगर उनकी नौकरी ऐसे है, हम अच्छे हैं मगर दिन भर फोन पे रहते हैं. सो आर एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस कुछ डिमांड कर रहे हैं आपके रिलेशन की रोल में? दैट यू हैव टू थिंक. So see, I'm just putting the questions because answer for every question will be different for every person, different for different person. सबको एक साथ नियम नहीं लगाएंगे ये, क्योंकि everyone की लाइफ की सिचुएशन अलग है, उनके एक्सपीरियंसेस अलग है, उनके पार्टनर्स के पर्सनालिटीज अलग है. सो इट विल बी डिफरेंट, बट यू हैव टू फाइंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. दैट डज माई हस्बैंड, माई वाइफ नीड्स और माई पार्टनर नीड्स समथिंग एल्स देन व्हाट आई एम गिविंग और व्हाट आई अज्यूम दैट आई एम गिविंग. ओके. सेकेंडली, एक्सटर्नल कुछ डिमांड्स ऐसे हैं जो अपार्ट फ्रॉम मी एंड माई पार्टनर है. व्हाट कैन बी डन ऑन दैट? बिकॉज यू कैनॉट you cannot change the people. If your husband is extremely good but your mother-in-law is not, you cannot change the mother-in-law. Maybe this option will give some relief to father-in-law, but it's not possible. Jokes apart again, isn't it? So the scene is that she is there, he is there, family is there, husband is there, नौकरी मेरी 8 घंटे की है, 12 घंटे की है. Now what can be done? That's okay. अरे हम बहुत अच्छे बाहर जाके घूम के आते यदि इनकी नौकरी ऐसे नहीं होती. अरे मगर है ना वैसी नौकरी, तो क्या अभी जाएंगे क्या? तो यू हैव टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन फॉर वॉट एवर इज कंसिडरिंग. जो हम मैथमेटिक्स में करते हैं ना कि दिस डेटा इज गिवन टू यू, नाउ सॉल्व द प्रॉब्लम. दिस इज द डेटा यू हैव, नाउ विद दिस डेटा यू हैव टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन. दैट्स इट. एंड थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यू हैव टू आस्क योरसेल्फ, do you feel relaxed and happy with your partner? If yes, then probably your partner is doing amazing job. But this question you have to ask to your partner also. And if she or he says yes, then you are also doing amazing job. क्योंकि मैंने बहुत बार ऐसे लोगों को सुना है कि अरे अभी गया बाबा टूर पे 1 महीने के लिए, अभी शांति है 1 महीना. So if your husband, your partner is 1 महीने के लिए दूर गए तो you are feeling relaxed, something is wrong.
आप सिर्फ ऐसे ही मस्करी में कह रहे हो तो बात अलग, बट अदरवाइज इट शुड नॉट, इजंट इट? कभी मतलब बहुत सारे जोक्स व्हाट्सएप पे आते हैं कि अभी ये दिवाली क्या, श्रावण महीना आ गया, अधिक मास आ गया, बीवी मायके चले गई, इज इट रियली सो? If you are really feeling happy and relaxed in absence of your partner, then you are in critical condition. You have to very well work on it. This is very important. I hope you are agreeing with me, isn't it? Now, when we are talking about emotionally intelligent, partner, how to deal? अभी हम इमोशनली इंटेलिजेंट हो गए, अभी करना क्या है? Now, you will focus on problem and not blame. Let us say, सुबह चाबी गुम हो गई, योर पार्टनर आर, हस्बैंड वाइफ व्हाटएवर, चाबी कहाँ पे है? व्हाट वी से? अरे कल ही तो तुमने वहां रखी थी। अगेन ब्लेम, कल ही तुमने रखी थी, हमेशा तुम ऐसे करते हो, मुझे कहाँ बताते हो, आपकी आदत ही वैसी है। अरे प्रॉब्लम क्या है अभी की नहीं मिल रही ना, फोकस ऑन दैट। व्हाट इज टू बी डन नाउ? वी ऑल द टाइम ब्लेम एंड जस्ट टॉक ऑन द पास्ट। फिर वो हस्बैंड भी बोलेगा कि अरे तुम्हारे हमारे आई ऑलवेज इन वन ऑफ द वर्कशॉप्स आई रिमेम्बर एक कपल था एंड दैट हस्बैंड सेड टू मी दैट कि हमारे घर में हमेशा बहुत पसारा होता है। मैंने बोला जस्ट वेट, डोंट से हमारा, से मेरे वाइफ के घर में पसारा होता है। तो बोले क्यों? बोले इफ यू आर सेइंग हमारा घर, देन इज इट नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू? इफ यू आर सेइंग कि हमारे घर में पसारा है, नो, पसारा है तो वाइफ के घर में, यू आर स्टेइंग एट वाइफ हाउस। Then he realized in this one line, yes, that is what we don't think this way, कि पसारा है तो बीवी का घर है क्या? फिर आप बीवी के घर में रह रहे हो, तुम्हारा घर है ना, यू आर सेइंग हमारा घर, देन इज इट नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू क्लीन इट? ऐसे कोई लिख के नहीं रखा है कि भाई शादी में जब हम वो 7 फेरे लेते कि पसारा वो बीवी करे, नो। सो व्हेन यू से इट्स योर, द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑल्सो योर्स। So we focus on problem. If you are emotionally intelligent, then now onwards, you will not focus on blaming each other. You will focus on solving the problem. Then secondly, respect the feelings you have with each other. You have to respect. For example, आप मतलब एक एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, आपका हस्बैंड का दिन भर का ड्यूटी है, शाम को वापस आता है और इवनिंग जो लेट्स से हाउस वाइफ है कि शी इज एट होम एंड दोनों में से किसी को तो भी तो एटलीस्ट समझना पड़ेगा। इफ द हस्बैंड सेज ही इज टायर्ड, तो वाइफ शुड नॉट इंसिस्ट कि अरे दिन भर घर में बोर हो जाती हूँ, मुझे लेके जाओ, तुम्हारा तो रोज का ही काम है वो, मैं कब बाहर जाऊं। आइदर शी हैज टू अंडरस्टैंड और ही हैज टू अंडरस्टैंड कि दिन भर घर में ये भी पकती है, तो कुछ ना कुछ मिडवे निकाल सकते हैं, समथिंग। सो यू हैव टू रिस्पेक्ट फीलिंग ऑफ ईच अदर, दोनों के एक दूसरे को समझने पड़ेंगे। And third important part, just tell me, you can just remember and tell me कि आप दोनों मिलके बहुत खुल के कितने बार हंसे, कितने बार और कब हंसे। ह्यूमर इज अ गुड, बहुत अच्छा है लाफ्टर, यू हैव टू कीप दैट इन योर लाइफ। यू हैव टू पे अटेंशन हाउ यू फील व्हेन योर लवर इज नॉट अराउंड। जो मैंने वैसे बताया कि आपका लवर यदि आपके साथ में नहीं है, रोमांटिक पार्टनर आपके पास नहीं है, तो इफ यू मिस, if you genuinely feeling the absence, then really you are well with each other. मगर आपको कुछ ज्यादा फर्क ही नहीं पड़ता, तो you have to work on your relation. क्या क्यों ऐसे हुआ है? You have to find out the reason. And all the time I give this example also that whatever symptoms you see, this is a symptom कि आपको आपका हस्बैंड नहीं है, आपकी वाइफ नहीं है, तो अच्छा लगता है, I mean you're okay with it. Okay, if you feel that it's a symptom, you have to work on the symptom. मतलब जैसे बुखार आता है, हमें बुखार आता है तो हमें क्रोसिन लेते हैं, मगर क्रोसिन लेते हैं तो बुखार कम होगा, मगर बुखार हमें किस चीज से है, मलेरिया से है कि कोरोना से है, ये जब तक पता नहीं चलेगा तब तक हमारा बुखार जाएगा नहीं। सो वी आर नॉट गोइंग टू वर्क सिम्प्टोमेटिकली, वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द रूट कॉज, दैट्स व्हाट इज रिक्वायर्ड। ओके, एंड फॉर दैट यू हैव टू लिसन टू योर बॉडी एंड नॉट माइंड। क्योंकि कोई क्या कहेंगे इसलिए हम कहते कि नहीं यार देखो, माय हस्बैंड इज नॉट देयर, आई एम फीलिंग सो बोर्ड,
But when your body says, "Oh, I'm so relaxed," you have to work on it, isn't it? So you have to listen to your body and not your mind. Okay. I think we are not. How much time is there? Yeah, we have time. Now, why we have to do that? Because basically, love is a concept. You cannot show, okay, see, I have got sari for you, so I love you. No. As a romantic partner, as a husband wife, उसके लिए सारी तो दूसरा और भी कोई दे सकता है, मगर as a husband, as a wife, it's a special relation, so you have to treat it specially. It's a big concept, ना, love big concept है, and marriage is not a big thing. Marriage is millions of little things starting from day one. You know? Every day. आप यदि जिम में जाते हो और मसल 6 पैक एक दिन में होता है क्या? नहीं होता है. बहुत पसीने निकालने पड़ते हैं, रोज जाना पड़ता है, महीनों जाना पड़ता है, सालों जाना पड़ता है, तब जाके आपके मसल्स बनते हैं. तो आपका रिलेशन भी आपको बनाना पड़ेगा, तो आपको बहुत जेन्युइनली रोज काम करना पड़ेगा. एक दिन करके नहीं चलता है. और जिस दिन आप जिम जाना बंद करोगे, अगेन यू विल कम बैक टू द ओरिजिनल शेप. Same way, when you will stop working on your relation will again start deteriorating. So it's a continuous process. So again, you have to ask a question. 2 questions here now you'll be asking to you. How I can show that my partner, कि I love him or her today. मैंने आज मेरे हस्बैंड को, मेरे वाइफ को प्यार किया, मैं उनको प्यार करती हूँ. ये मैसेज मैंने आज दिया क्या और किस तरीके से दिया? ऐसे नहीं कि वो अज्यूम करे, उसको क्लियरली अच्छे से पता चले ऐसे दिया क्या. एंड सेकेंडली, वॉट एवर माई हस्बैंड माई वाइफ इज डूइंग फॉर मी, आई हैव टू सी दैट हाउ माई हस्बैंड और वाइफ हैज शोन लव फॉर मी. क्योंकि हर एक के प्यार जताने के तरीके भी अलग होते हैं. तो ये 2 चीजें हमें हमेशा पूछनी है हमेशा, कि मैंने मेरे लाइफ पार्टनर को, रोमांटिक पार्टनर को प्यार किया कि नहीं, और उसने मुझसे आज प्यार किया तो वो कहाँ किया, कैसे किया, मुझे ढूंढना पड़ेगा. आई रिमेम्बर व्हेन आई एक मिनट, मुझे व्हेन आई स्टैंड नियर माई किचन प्लेटफॉर्म, यू नो, फॉर माई रोटी एंड ऑल. So more than a half an hour, 1 hour I have to stand there. Then my husband slowly comes and gives some, वो जो पैर पोछने का होता है ना, वो लाके खड़ा कर देता है कि अरे ठंडा है नीचे, थोड़े उस पे खड़ा हो जाए. It's a very little thing, but it shows that he has concern for me, he loves me. So we have to find out such, you have to gather such love moments for each other. That is important. Now another a very important part is emotional intelligence का use in our relation with children. You know, now the world, आप मुझे बताओ, जब आपका बच्चों का कुछ रिजल्ट लगता है, मतलब आप आपके बच्चों की वर्थ या आपका बच्चों का आपके लिए एक्सेप्टेंस उनके सिर्फ मार्क्स पे रखते हैं क्या? सिर्फ एकेडमिक अचीवमेंट पे है क्या आपका बच्चा? सो इमोशनल सेल्फ रेगुलेशन जो है वो बहुत ज्यादा इग्नोर किया है हमने हमारे बच्चों के रिलेशन में. और बच्चों को भी हमने ये बताना है कि हम उनसे प्यार करते हैं. कम्युनिकेट करना है कैसे? उस चीज से जैसे उनको समझे. नाउ यू कैन सी हियर 3 डिफरेंट कम्युनिकेशन स्टाइल्स. यू नो, ममाज इंटेंशन इज वेरी जेन्युइन इंटेंशन कि मेरे बेबी को बहुत अच्छे से गर्म खाना मिले, मगर व्हेन शी इज टॉकिंग टू हर, मम्मी की तो पीठ है उसके तरफ. नाउ जस्ट इमेजिन कि आप किसी से बात कर रहे हो और वो बंदा आपकी तरफ पीठ करके खड़ा है. हाउ यू विल फील? You won't like it. You want a person to see in eyes. Why don't you do with your children then? So this is one part. Secondly, conveniently, when we want to talk to someone, when we are busy, when we are in shopping, when we are doing something, we keep our child with the mobile. कि जाओ मोबाइल देखो, मैं गेम लगा दूं आपको, जाओ मोबाइल देखो. एंड देन बाद में हम कहते हैं कि यार वो मोबाइल छोड़ता ही नहीं है. कैसे छोड़ेगा? तुम इस उम्र से उनको आदत डलवा रहे हो. So that is one important. And the third one is this: when you are coming to the child का level, उनके पास, उनके साथ, उनके नजदीक बैठ के. So this is the most effective way of communication to understand this. Okay. Then
यू जस्ट चेक द डायलॉग्स कि आप इनमें से कौन से डायलॉग्स यूज करते हो. आपके बच्चे आते हैं स्कूल से या जब भी है व्हाट हाउ डू यू टॉक टू योर चिल्ड्रन. इफ यू डोंट फिनिश योर होमवर्क आई एम नॉट गोइंग टू टेक यू फ्रॉम स्कूल. आप मुझे परेशान करें, मैं स्कूल में आपको लेने ही नहीं आने वाली आज. आपको पता है कि आप लेने आने वाले हो, मगर वो चाइल्ड को नहीं मालूम ना, तो पूरा दिन उसका एंग्जाइटी में जाता है. तो इमोशनल इंटेलिजेंट पेरेंट का ये लक्षण नहीं है उनको ऐसे थ्रेट में रखना. यू टेक इट वेरी कैजुअली बिकॉज यू नो दैट यू आर नॉट गोइंग टू डू इट. और ये वाला सेंटेंस मैंने बहुत बार सुना है कि अभी ये इतना परेशान करता है ना, अभी मैं इसको हॉस्टल में डालने वाली हूँ. Why are you going to do that really? No. Then why you are why you are showing that your words have no importance? You think you are hurt and angry when your teacher scolded you in front of all. ये बच्चा आके बोलता है कि मम्मा स्कूल में डांटा. Then you will say, तूने कुछ किया होगा. We don't accept them. This is what the validation of negative emotions are, Monica ma'am. See, when your child is telling you that the teacher, he was upset because the teacher scolded me, then you have to, I think you are hurt, but you are not angry, right? आपको दुख हुआ है, आप गुस्सा नहीं हुए हो, क्योंकि आपको सबके सामने डांटा, isn't it? And someone says, if you are two children, someone says, no, I don't have any problem with my elder son. बस इतना ही सेंटेंस बोलते हैं. अरे मगर वो जो यंगर है उसको क्या, वो तो उसका दूसरा मीनिंग ही लेता है ना. आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विथ माई एल्डर सन. उसको कुछ नहीं बोलना पड़ता, पढ़ाई करो वगैरह, इतना ही बोलते हैं बस. मगर ये दूसरा वाला जो हिडन सेंटेंस है वो बराबर पकड़ता है छोटा वाला बच्चा कि प्रॉब्लम मेरे साथ है, मुझे बोलना पड़ता है. सो आर वी कम्युनिकेटिंग दिस वे? अगेन दिस इज अ वेरी पॉपुलर सेंटेंस बाय ऑल पेरेंट्स. वी डोंट प्रेशराइज हिम, वी डोंट से एनीथिंग कि पढ़ाई कर कि तुझे जेईई करनी है आईआईटी में. मगर उसने पढ़ाई की तो उसी को आईआईटी में मिलेगा ना. वी आर वेरी मैनिपुलेटिव एंड sometimes not good parents, So if such type of talk we have, only the third one is emotionally intelligent का parent का talk, बाकी सब no. So after this 5 days का session, I think all of you will be talking in the third type. You will be understanding the emotion of the child. If your son throws tantrum, और हम क्या, एक चिल्लाओ मत, हम उस पे चिल्ला के ही बताते हैं चिल्लाओ मत. What's the use of it then? Then he can say back, अरे आप भी तो चिल्ला रहे हो अभी. This is not the way to talk to them. You can say कि see, I understand that you are not happy with whatever happened. Just we will talk on this after you calm down. This sentence tells the child कि मुझे मेरे मन का नहीं हुआ है, मम्मा को पता चला. Or if we want to negotiate on this, I will have to calm down. So you have to give them concrete things. बच्चा क्यों रोता है? लेकिन से गिर गया रास्ते पे जाते जाते, बैं करके रोने लगा. क्यों? उसको लगा करके नहीं, उसको दुख हुआ, ये आपको समझना चाहिए इसलिए. तो आप उसको यदि ऐसे ही पहुंचाते हो कि आपका दुख समझ में आ गया, तो why he will cry? So understand their feelings and negative feelings understand करना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उन्हीं को हम डिनाई करते रहते हैं. तो ये जो हमारे 4 प्रकार के पेरेंटिंग, एक है डिसमिसिव पेरेंट्स, डिसअप्रूविंग पेरेंट, लेज़र पेरेंट्स एंड इमोशन कोचिंग पेरेंट. अभी इसका मतलब क्या है? ये देखो सीन है, बहुत पसारा बच्चों ने किया हुआ है. इसमें हम क्या बात करेंगे? आप जस्ट कीप योर सेल्फ काम. लेट अस से आपका लड़का स्कूल से आता है और बोलता है कुछ पता नहीं लगा कि मम्मा मेरे स्कूल में आज उसने ये किया, मुझे ये किया. डिसमिसिव पेरेंट्स क्या बोलेंगे? वो छोड़ो, टिफिन खाया कि नहीं? अरे वो क्या बता रहा है कि मुझे आज कुछ दुख हुआ, प्रॉब्लम आया, तुम क्या पूछ रहे हो? वो छोड़ो, डिसमिस कर दिया ना उसको. खाना खाया कि नहीं? क्योंकि हमारा इंटरेस्ट उनके टिफिन में है एज अ मदर. ये हो गया डिसमिसिंग पेरेंट्स. डिसअप्रूविंग पेरेंट्स क्या बोलेंगे? अरे इतना क्या है फिर उसमें, कुछ भी क्या, मुझे तो किसी भी चीज का ये लगता है. उसकी इमोशंस डिसअप्रूव करना, that is disapproving parents. And all this happens with negative emotions only. So negative emotions validate करने का मतलब उनकी negative emotions जो है वो बहुत ही valid है, logical है, होते हैं ऐसा, ये ऐसा होना बहुत normal है.
ये वैलिडेशन उनको जब मिलेगा तब उनका एक्सप्रेशन भी उनको ढंग से आएगा। तीसरा है लेजे फेरे, क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी कर, मुझे क्या, लेट गो, वेरी फ्री लिबर्ट, कुछ भी करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लाइक दैट। और इमोशन कोचिंग वाले पेरेंट्स बोलेंगे कि ओ देन यू मस्ट बी वेरी मच एंग्री, बट आर यू रियली एंग्री, आई थिंक यू आर हर्ट। क्योंकि मेजर जो होते हैं हमारे हर्ट, एंगर, गिल्ट, डिप्रेशन, सैडनेस, यही वाली इमोशंस होते हैं। तो थोड़ा उनके बारे में यदि आप अच्छे से जान लो, स्पेशली नेगेटिव इमोशंस के बारे में, तो यू विल बी एक्सट्रीमली वेल टू एम्पथाइज। क्योंकि किसी को जब खुशी होती है उसको एम्पथाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, किसी को जब दर्द होता है उसको एम्पथाइज करना पड़ता है। सो वैलिडेशन ऑफ नेगेटिव इमोशन इज दैट यू आर ओके विथ नेगेटिव इमोशंस ऑफ योर चिल्ड्रन। You don't dismiss that, you don't disapprove that, and you say that you don't care, ऐसे भी नहीं है। या I do care। अभी जैसे ये वाला लड़का है, आप कह सकते हो कि यस बहुत पसा रहा है ना, तुझे कंटाला आएगा ना अभी करने में, बट शैल वी डू दैट? एक ही उठाओ ना, बाकी वो उठाएगा, मगर ये उठाने में कंटाला आता है, कम से कम इस फीलिंग का तो वैलिडेशन होगा। So emotion coaching parents is that. Okay, then yeah, we have time. Then next comes is emotional intelligence at work. This is very important. This is very important. You know, जब हम काम कुछ करते हैं तो हमारे मेजरली 5 ही ऐसे इमोशंस होते हैं जो हमें उसके ऊपर काम करना है, मतलब ओके। और यदि वर्क प्लेस जो है हमारा, इफ इट इज विथ हाईली इमोशनल इंटेलिजेंट पीपल, then that workplace is open to change. It will be able to put the efforts necessary to succeed. यदि कोई कहेगा, क्योंकि चेंज किसी को नहीं अच्छा लगता, क्योंकि चेंज में हमारा कंफर्ट जा रहा है। आई एम कंफर्टेबल विथ वॉट एवर आई हैव। अभी कोई कहेगा कि अरे आज से ना आज से तुम एनएसएस डिपार्टमेंट का हेड है, अभी तुम काउंसलिंग सेल का नहीं हो, यू आर नो अंडर टेंशन कि भाई काउंसलिंग का मेरा अच्छा सा सेटअप बन गया था, आई वॉज कंफर्टेबल, अभी सडनली मुझे एनएसएस दे दिया। सो चेंज किसी को नहीं अच्छा लगता, बट यदि इमोशनली इंटेलिजेंट आप हो तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द बॉस, द मैनेजमेंट, द सुपीरियर, द हेड बेटर, कि उनकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, दे आर ऑल्सो आंसरेबल टू समवन, दे ऑल्सो हैव टू डू ऑल दिस थिंग्स, and boss will also be emotionally intelligent, so he will understand, sir, I know that you are very much comfortable with this counseling cell and you will doing it very well, but you know I think you are doing better, so you are good with the students, so now I think you must take the NSS charge, and whatever responsibility you are or whatever help you need, I am there with you. So it can be mutual, and then they will be open to change. That's very important. Because when we have emotional intelligence at workplace, तो जो हमारा एक ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस है वो कम होता है, डिसीजन मेकिंग जो हम करते हैं वो इम्प्रूव होते हैं, हमारा जो स्टाफ का टर्नओवर है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब बहुत बार मैंने देखा है कि नंबर ऑफ रीजंस देयर आर, बट इतना ज्यादा टर्नओवर है स्टाफ का, दैट्स नॉट गुड, स्टेबिलिटी नहीं आती है इंस्टीट्यूट को उससे। इंक्रीज पर्सनल वेलबींग, एक हम ऐसा कहते हैं कि इफ द यू नो इफ देयर इज सम इमोशनल डिस्टर्बेंस विथ अ लेडी एट वर्क, उसको दिख रहा है कि कुछ गड़बड़ है, तो उसके कलीग ने समझना चाहिए कि घर में कुछ गड़बड़ हो गया है, इज नॉट गुड एट द आई मीन सम डिस्टर्बेंसेस एट द होम फ्रंट। और यदि घर में ऐसे लगता है कोई आदमी का थोड़ा नहीं चल रहा है ठीक से, ध्यान नहीं दे पा रहा है, तो समझ लो कि उसके काम में कुछ गड़बड़ है, उधर कुछ चल रहा है, क्योंकि वो रिफ्लेक्ट होता है। So if you are happy at workplace, you are happy at home front. If you are happy at home front, you are productive at workplace. So हमारा वेलबींग ओवरऑल ही अच्छा हो जाता है। लीडरशिप एबिलिटी अच्छी होती है, क्योंकि लीडरशिप का कैसा है, लीडरशिप तो छूट तो नहीं दे सकता सबको, और बहुत जम के पिंच भी नहीं निकाल सकता है। तो बेस्ट लीडरशिप कैसी है कि वो पिंच तो निकाल रहा है, मगर कितना जोर से निकालना है और कब छोड़ना है ये उसको मालूम है। दैट इज द परफेक्ट लीडरशिप, क्योंकि उसके बिना काम भी नहीं होगा, छूट दिया तो भी नहीं चलेगा, बहुत पकड़ के रखा तो भी नहीं चलेगा। तो ही अंडरस्टैंड्स कि कितना जोर से पिंच करना है और कितना टाइम तक पिंच लेके रखना है। सो इमोशनल इंटेलिजेंट लीडर डज दैट वेल, एंड ओवरऑल टीम परफॉर्मेंस जो है वो बढ़ के और इट बेनिफिट्स एवरीवन।
isn't it? That is what we need to understand. So of course, before you understand others, you have to understand yourself. जैसे मैं कहती हूँ कि भाई लोग कहते हैं कि मुझे कोई समझ ही नहीं ले पाता है. अगर आपने खुद को समझा है क्या पहले, कि आपको यदि खुद को समझा है तो आपको समझ में आएगा कि मैं जो कुछ एक्सप्रेस कर रही हूँ वो मेरे इमोशंस है ही नहीं. जो मेरे क्लियर है यदि इमोशंस तो मैं एक्सप्रेस भी ढंग से कर पाऊंगी. क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे गुस्सा आया है, एकदम हमारा जो कंटिन्यूम का आखिरी है, गुस्सा आया है, तो मैं एक्सप्रेस भी उसी तरीके से कर रही हूँ. मगर यदि मैं इमोशनली इंटेलिजेंट हूँ तो मुझे समझेगा कि नहीं, अरे मैं तो यहाँ फ्रस्ट्रेशन में हूँ, मैं इरिटेशन में हूँ, मैं अनॉयंस में हूँ, तो मैं थोड़ा सा स्लोली डिस्कस करूंगी उसको. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ फर्स्ट टू अंडरस्टैंड अदर्स फर्स्ट. नाउ दूसरी बात ऐसी है कि इफ यू आर हमारा एक डिफेंस होता है ये, किसी को कुछ प्रमोशन मिला, किसी को अच्छा कुछ कह दिया, अरे नहीं वो तो क्या मैनेजमेंट का चमचा है, वो तो फेवर करता है, उसको थोड़ा एप्पल पॉलिशिंग सामने सामने करना आता है. दिस इज अवर डिफेंस. जब कोई कहता है कि ये टीचर बहुत पॉपुलर है, अरे नहीं वो सब स्टूडेंट को उनको कुछ उसका ये नहीं है, बहुत प्यार से बात करता है, बहुत क्लोज है उनके साथ. दिस इज अवर डिफेंस. So what you have to do, if you see, we understand that I am not popular in students. लोग मुझसे डरते हैं, मेरे साथ मेरे बारे में रिस्पेक्ट रहे, मुझसे डरे नहीं ना. वो डरने की क्या बात है, मेरा रिस्पेक्ट करना चाहिए. सो यू हैव टू इंट्रोस्पेक्ट एंड कंपेयर योरसेल्फ विथ योर अदर गुड कलीग. उसके साथ कंपेयर करो खुद को, मतलब उसको ऐसे नजर लगा के या ऐसे नहीं, बट यू कंपेयर कि व्हाट्स देयर इन दैट पर्सन मोर और व्हाट्स लैकिंग इन मी. क्या है मुझ में कि भाई इतना नहीं कर पा रही हूं मैं. Unless you find out the root cause, you won't be able to work on it. That is very important. और root cause निकालने के लिए इंट्रोस्पेक्ट खुद को करना पड़ेगा. इंट्रोस्पेक्ट करते वक्त खुद के बारे में जो कुछ निगेटिव मिलेगा उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि यार मैं बहुत रूड हूँ लोगों के साथ, मैं लोगों का बहुत ज्यादा इंसल्ट करती हूँ, मुझे लोगों को लेट डाउन करने में बड़ा मजा आता है. यू इंट्रोस्पेक्ट दैट एंड देन वर्क ऑन इट इफ यू वांट टू इम्प्रूव. एंड द थर्ड C, communicate, care, concern. Communicate properly, take care of ourselves and others, and have concern. स्टूडेंट्स के लिए भी कंसर्न कराओ. मैं बहुत बार देखती हूँ अभी जो ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं ना, बच्चे मतलब मेरे जो दूसरे कॉलेज के बच्चे हैं जो पहले मेरे स्टूडेंट्स रहे थे, वो कहते हैं कि मैम ऑनलाइन क्लास है तो भी हमें 5 मिनट भी लेट हो गया तो वो अलाउ ही नहीं करते क्लास में. अरे ऑनलाइन है भाई, किसी का डेटा हो सकता है, नहीं हो सकता है, कभी कनेक्टिविटी का इशू है या कभी डेटा से कहीं कुछ काम निकल आया है, क्या फर्क पड़ता है. लोग लेट कमर्स को अलाउ नहीं करते हैं. 10 मिनट लोग, अरे 1 घंटे का लेक्चर है ना, 10 मिनट लेट है तो उस 10 मिनट के कारण उसको 40 मिनट्स का आप लॉस करोगे क्या. क्या फर्क पड़ता है, आने दो ना, आने का 10 मिनट अटेंड करेगा आपका क्लास. वाई यू आर सो स्ट्रेट, वाई थिंक दैट कि वाई योर स्टूडेंट डजंट वांट टू अटेंड योर लेक्चर. Think that. So emotionally intelligent teacher will introspect, allow everyone. अरे आखिरी के 5 मिनट में अटेंडेंस के लिए आ रहा है, आने दो ना, क्या फर्क पड़ता है. इट्स हिज चॉइस. वाई यू आर बीइंग स्ट्रिक्ट. आप पढ़ाओ ऐसे कि पूरा बच्चा पूरा आपका क्लास अटेंड कर पाए, और नहीं तो आपका उसको अटेंड नहीं करना है. इट्स हिज चॉइस. यू कैन नॉट फोर्स हिम टू डू इट कंपल्सरीली. डजंट मैटर. लेट हिम कम. टेक हिज लेट हिम. आई मीन कुछ कहेंगे लोग कि अरे कभी भी आने दो, कभी भी आने दो. आएगा, पीछे से बैठेगा, 10 मिनट लेट होता है करके 40 मिनट का उसका लॉस नहीं कराओ आप. लेट देम कम. इमोशनली इंटेलिजेंट टीचर हो तो यू विल अंडरस्टैंड फ्रॉम हिज पर्सपेक्टिव. दैट्स इंपॉर्टेंट. एंड वॉक द टॉक. दैट्स वॉट एवर यू, आई मीन इट शुड नॉट बी प्रीची. जो आप कह रहे हो वो करो. आप यदि बोलते हो कि भाई ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, अगर वो आप कर रहे हो क्या वो देखो. ओके. And this line, what is focus on the path and not on the destination. It's enjoy the process. Why you are looking for that? Enjoy the process. Okay. You are enjoying teaching. You are taking your complete efforts. Then whether you are becoming popular or not, it's not in your hand. But you are taking complete efforts. You are doing your job very honestly. That's fine. So just keep on improving. This is what you can do. Isn't it? So this is again, we have still 10 minutes. I can just say that. Am I too fast? ऐसे लग रहा है मुझे कि मैं फटाफट खत्म करने के इसमें ऐसे नहीं. Yeah.
सो इमोशनल इंटेलिजेंस यदि पूरा आपका ऑफिस है, इंस्टीट्यूट है, ऑर्गेनाइजेशन है, तो क्या होगा? अपसेट एम्प्लॉय विल फाइंड अ कंपैशनेट लिसनर. कोई तो मिलेगा उसको, एक कंपैशनेट कोई पार्टनर मिलेगा. ओके, सो जब वो कहता है कुछ कि अरे ये ऐसा, एक बहुत मजे की बात बताती हूँ मैं, कि जब भी हम कम्युनिकेट, लोग मतलब काफी जगह मैंने ऐसे देखा है इंस्टीट्यूट्स में कि लोगों को अलाउ नहीं करते एक दूसरे से बात करना, क्योंकि वो गॉसिप करते हैं. अब गॉसिप क्यों करते हैं? ऑफकोर्स किसी को अच्छा नहीं लगता काम लगाना, कोई किसी को चाहे तो बिना काम का पैसा मिला पगार तो दैट विल बी द फर्स्ट चॉइस, इजंट इट? बट काम करते हैं, कुछ चेंज किया, ज्यादा काम दिया, तो ये इमोशनल इंटेलिजेंट लीडर की भी एक जिम्मेदारी है. मोस्टली क्या होता है, द पीपल हु इज वर्किंग एंड डूइंग वेरी प्रॉपरली, किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी के वो यदि अच्छे से कर रहे हैं तो काम उन्हीं के गले में आता है. एंड द वन हु इज नॉट डूइंग दैट जॉब प्रॉपरली, वो अच्छे से अंडर द रडार निकल जाता है. दिस द लीडर शुड टेक केयर ऑफ, कि लेटर से 10 रिस्पॉन्सिबिलिटी से 10 टीचर को बांट दो, और वो टीचर जो अच्छे से नहीं करता है उनसे काम कैसे करवाना, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. वो काम नहीं करता इसलिए दूसरे के गले में डालना इज नॉट द इमोशनल इंटेलिजेंस का टीचर और लीडर. यू हैव टू सी दैट कि वो काम नहीं करता, ये उस बंदे का या मैनेजमेंट का या टीचर का प्रॉब्लम है. एज ए लीडर यूर, ये बाकी लोगों का प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि फिर वो लोग फ्रस्ट्रेट होते हैं कि भाई सब हमारे गले में आता है, वो तो निपट जाता है क्योंकि वो ढंग का काम नहीं करता. काम नहीं करता तो देयर आर 2 ऑप्शन. वाह, आप ढंग का काम न करने वाला आपने क्यों रखा है, और दूसरी बात, उसे ढंग का काम कैसे करवाना ये आपको देखना है. isn't it? So, एक अपसेट एम्प्लॉय जो है वो ये आपसे बात कर पाएगा यदि आप इमोशनली इंटेलिजेंट हो, क्योंकि आप दूसरे को समझ पाओगे. और ये भी जो है, जो अपसेट एम्प्लॉय है, ही विल ऑल्सो बी एबल टू एक्सप्रेस द थॉट्स वेरी कंपैशनेटली, प्रॉपरली एंड अप्रोप्रिएटली टू यू. तो ये दोनों तरफ है. ओके, मीटिंग में वन साइडेड मीटिंग नहीं होनी चाहिए. मीटिंग इज लाइक, व्हाई वी टेक द मीटिंग, इट्स टू बी द डिस्कशन. अदरवाइज जो आपने डिसीजन लिया है वो अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दो कि हमने डिसाइड किया है. मीटिंग लेने की क्या जरूरत? यदि मीटिंग लेना है तो यू हैव टू अंडरस्टैंड एवरीवन्स व्यूज कामली, गिव चांस वन एट अ टाइम, सो सब लोग दूसरे का सुन रहे हैं, एंड देन वी कैन सी द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ इट. Then you can reject whether that is to be taken or not. It can be decided. Okay. Then thirdly, people will express themselves openly. Then it will be flexibility. Flexibility, emotional intelligence की कब रहेगी? मुझे I will just share one example. I was working with Dr. D.Y. Patil Arts College in Pimpri. और अभी आजकल तो ये हो गया है, थंब वाला whatever, या बायोमेट्रिक्स है. सर मेरा वर्किंग आवर 7 घंटे है, 8 घंटे है, तो इट इज काउंटेड. यदि मेरा 10 o'clock का लेक्चर नहीं है, एंड इफ आई रीच बाय 10:15, आई विल स्टार्ट बाय 5:15, तो मेरा 8 घंटे का पूरा होता है, 7 घंटे का जो भी है. मगर 10 बजे जाना है तो लोग रास्ते में गाड़ी फास्ट करते, कैसे कैसे करके दे आर जस्ट रीचिंग इट. इट्स नॉट लीव ना, वी हैव टू ट्रस्ट देम. बी फ्लेक्सिबल, बी फ्लेक्सिबल. और वैसे भी आपका 40 आवर्स का वर्किंग आवर नहीं होता है तो आपका सैलरी में दिखेगा. Whatever you can do that way, you can have some on that. So if you are flexible with this, यदि मेरा 2 बजे का लेक्चर है, मैं क्यों जान निकाल के 10 बजे पहुंचूं? Let it be ना, I will reach by 10:15, 10:30. What's the big deal? I am leaving the office by, मगर उसका एक सीलिंग और फ्लोर इफेक्ट होना चाहिए. ऐसे नहीं है कि भाई मैं 12 बजे आऊं और 8 बजे जाऊं. नो, उसका कुछ होना चाहिए, दैट्स फॉर श्योर. तो वो थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी एंड कोड ऑफ कंडक्ट यदि हो जाए तो इट रियली हेल्प्स. पीपल देन गेट फ्रीडम टू बी क्रिएटिव. इमोशनल इंटेलिजेंट है तो दे कैन मीट आउट ऑफ वर्क टाइम. मिलने दो लोगों को. दे आर गॉसिप भी कर रहे हैं, करने दो ना. कैथारेसिस है, वेंटिंग आउट है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं. मगर गॉसिप करने के लिए आप अभी इमोशनल इंटेलिजेंट हो गई है, मैनेजमेंट या हेड और जो सुपीरियर वन, देन यू आर टेकिंग केयर दैट उनको इतना मौका नहीं मिल रहा है गॉसिप करने का, isn't it? Then emotionally intelligent people at work, they can handle the stress, uncertainty and anxiety that comes with working in business.
ये बहुत अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। सर्टनिटी यदि नहीं है तो उनको हमेशा एंजाइटी रहेगी। तो जो भी है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है तो 1 साल का है, डिपेंडिंग ऑन द परफॉर्मेंस। जो भी आपको मतलब कोड ऑफ कंडक्ट है कि आपके बारे में ऐसे 4 कंप्लेंट आई, 5 कंप्लेंट आई तो आपको व्हाटएवर जो भी होगा, मगर कुछ तो सर्टनिटी हो, स्ट्रेस और एंजाइटी कम होगी। इज़न्ट इट? मैनेजमेंट की जो मैंने बात की या हेड की जो बात की, तो लीडर जो है इज नेवर एंड लोन वुल्फ, अकेला नहीं होता है ना वो। जब वो नेविगेट कर रहा है, कुछ देख रहा है भाई सामने का, तो उस नाव को, उस जहाज को धकेल के लेके जाने वाले तो कोई होने चाहिए। तो इट इज पॉसिबल फॉर अ लीडर टू बी लीडर बिकॉज ऑफ फॉलोअर्स ओनली। तो फॉलोअर्स को भी ये ध्यान रखना पड़ेगा कि देयर इज समवन हु इज नेविगेटिंग, एंड नेविगेटर को भी पता होना चाहिए कि देयर इज समवन हु इज मूविंग अहेड। तो ये इंटरडिपेंडेंस है। नोबडी इज डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, इट इज इंटरडिपेंडेंस। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। सो इमोशनली इंटेलिजेंट पीपल एट वर्क, दे आर अवेयर ऑफ इट कि यार मेरे कारण ये लोग हैं और मेरे कारण इनके कारण मैं हूं, ये दोनों एक दूसरे के तुल्य। ओके। एंड जो एक मैं लास्ट बात करने वाली थी कि कमिटमेंट टू नर्चर द होल इंडिविजुअल, जो मैंने पहले देखा कि हमने खुद को समझना है, दूसरों को समझना है, रिलेशंस देखने हैं, इमोशंस में लिटरेसी लेनी है। कमिटमेंट टू नर्चर द होल इंडिविजुअल जो है वो ऐसा है, दिस इज आई, दिस इज विच टेल्स द प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन है ये, दिस इज माई प्रोनाउन आई। But myself is made up of number of small things. I am cook, I am maid, I am wife, I am sister, I am teacher, I am neighbor, I am friend. Number of things I am. So हर जगह मैं excellent ही रहूंगी, ऐसे हो नहीं पाता. So you have to nurture that complete whole individual, and you cannot blame the complete I with one of the lacunas in small I. As a wife मैं इतनी अच्छी नहीं हूं, इसका मतलब मैं ही अच्छी नहीं हूं, ऐसे नहीं होता है। तो ठीक है, आप मे बी थोड़ा टीचिंग आपका इतना अच्छा, डिलीवरी आपको नॉलेज बहुत अच्छा है, बट प्रोबेबली डिलीवरी करने का जो एक स्किल होता है वो इतना अच्छा नहीं है। डजंट मैटर, डोंट ब्लेम योरसेल्फ बिकॉज इट इज वन ऑफ द आईज। इफ यू आर नॉट दैट मच थरो इन द सब्जेक्ट, मगर जितना भी है वो बहुत अच्छे से आप सिखाते हो, ठीक है, सब्जेक्ट नहीं है आपका, उसका खुद में गिल्ट नहीं लो, या उससे आप प्राउड भी मत जाओ, प्राइड में बेसमेंट में जाओगे नहीं तो, भावना अपार्टमेंट। सो यू हैव टू नर्चर योरसेल्फ एंड यू हैव टू कमिट दैट यू आर नर्चरिंग द होल इंडिविजुअल। एक के कारण दूसरे को आई एम नॉट ब्लेमिंग, और एक के कारण होल को आई एम नॉट गेटिंग इन द प्राइड, एरोगेंस में नहीं जाना है। सो दिस विल कम when you will be emotionally intelligent, and you must have seen that emotionally intelligent person or emotional intelligence, how it is helping you to nurture your relation with your romantic partner, how it helps you to be as a parent. Parent is a it's not like आपके बच्चे हैं कि नहीं, parent is a status। आप यदि 4 साल के हो तो आप 2 साल के आपके भाई के साथ भी पेरेंटल एटीट्यूड में ही होते हो। आप अपने काम वाले बाई से बोलते हो कि पहले चाय पी ले, बैठ ले, पेरेंटिंग बोले हो। तो पेरेंट ये कोई बच्चे है कि नहीं है, शादी हुई कि नहीं, ऐसे कुछ नहीं, इट इज द एटीट्यूड। तो उसमें और प्रोफेशनल रिलेशन में हमने यदि इमोशनल इंटेलिजेंस का सच में इनकलकेट किया तो हाउ वंडरफुली इट वर्क्स, इट इज अमेजिंग, यू विल फाइंड द चेंजेस अमेजिंग। So I think with this I can stop, so we can have 5 minutes for question answers, and if I will the time, I will give you that videos, and I'm really thankful to all of you. With this, I will take the opportunity to let you know, all of you know, that just last month, 20th of this month, I have started with one YouTube channel in Marathi. So if you are a Marathi person, if you understand Marathi, then Psychology Sundays by Dr. Anuradha Harkare. You can just search on Google Psychology Sundays by Dr. Anuradha Harkare, and please subscribe that and listen to all the videos. And it will be coming with wonderful things from psychology. And my only intention was that because I changed myself after learning psychology, and I thought that this wonderful subject must not remain closed in the books
or restricted to the psychology students. So I have brought it to everyone who wants to be better. So thank you so much, guys. Session is open. Participant session is open for question answer. If anybody want to ask the question, you may ask. I think they are much more satisfied with your thorough explanation. That's why they don't have any question. Ma'am, if I just share the screen, is it okay? Yeah, you can share. Okay, I see on Webex I'm new, so I just will see how I can share the video. I mean, I just wanted to let everyone know that emotional intelligence का बच्चों को बचपन से हम कैसे inculcate कर सकते हैं. That's what I think we are finishing. We are having for 5 minutes. You can share your. Yeah, I'll just see that whether I can do it or not. I don't know. Okay. Yeah, this is one video. You just see that there are two videos, okay? And which one you think that it is familiar to us? Can you see that? Yes. Okay, there is no voice as such, but I don't know. Okay, so this is one scene. This is one scene, right? Now there is one more. Let me check it again. Okay, there is another one. You can just see that. You can see that? Yes. Ow! Ow! Ow, Johnny! Ow! Johnny! That really hurt! Okay, so I just wanted to show that what it says that Charlie, it hurts, you know, Charlie, it hurts. So what does it mean? आपने पहला देखा कि you know, when that boy says that जो हमारा इंडियन मैंने दिखाया था कि कोई हमें तकलीफ करता है हमें उसको एक उल्टा खींच मारते हैं. But the second child, when he was hurt, he just told that, Charlie, it hurts. So this is the way we are expressing the emotions, and you can see the difference. So I think which one is familiar to us, isn't it? Yeah. Yes, ma'am. So we can just carry on with the, you know, answer. One question is there in chat box. Actually, I'm just seeing it again where it has gone. Yeah. Chat box कहाँ पे है? Yeah, I saw it. Everybody know that emotional intelligence improves personal and social benefit, but how to implement in context? Okay. I think Dr. Thorath has asked, right? This is what I assume. No, it's Kedarnath Hota. The question is from Kedarnath Hota. Can you read, ma'am? Knows the. Can you read the question, ma'am, please, for me? Okay, everybody know that IE improves personal and social benefit, but how to implement in you? Yeah. मुझे लग रहा है ये from Dr. Rupali Thorath ऐसे लिया नहीं वो अच्छा वो नीचे का है. Okay, my bad. Yeah. Okay.
how to implement in you. That is what the perfect question one I think sir has asked, क्योंकि theory तो सब पता चल गई हमें, अभी खुद पे apply कैसे करना है, that is very important. Now first you have to do whatever 5 जो एक बताए हैं emotional intelligence के, 3 for self and 2 for others, right? You must have seen that. Now you have to introspect that when you give any reaction, when you talk to someone, whether that is fitting in out of all these 5. Suppose someone says to you कि अरे मुझे आज ये काम दिया HOD ने और मुझे बिल्कुल भी नहीं करना था. Are you saying that कि अरे वो वैसा ही है, HOD यार ऐसे ही करता है? So it means that you are not understanding the pain of that person. What he says कि उसको मतलब HOD को नाम रख के उसका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा. You have to ask that person कि उसको अभी प्रॉब्लम किस चीज से होने वाली है, कि क्या क्या होगा अभी. So ये जो 5 अलग अलग डोमेन हमने इमोशनल इंटेलिजेंस के देखे, उसमें मैं खुद किस तरीके से बिहेव करती हूँ, तो ऑलवेज टेक अ 5-6 सेकेंड्स का ब्रेक बिफोर यू रिएक्ट. That is the most easy way, that you have to just take a 6-second का break, because now as you have understood कि your reaction, it should be a response, it should not be a reaction, because if it is a reaction then it will be evolution का emotion. If it is a response then only it is civilized emotion. So आप सोच के response दे रहे हो क्या, बस इतना ही देखो, आपको अपने आप आ जाएगा. I think that this is only one question is there in chat box, right? So if there is no question, then we can conclude the session. I don't know whether I mean again as a very cliche sentence कि कुछ questions नहीं है तो सब कुछ समझा है तो कुछ नहीं समझा है. No, there are some messages in chat box like excellent session and very nicely explained. So I think yeah, it was very nicely explained. So Aruna, you can just conclude the session. Thank you, ma'am. We are very grateful to have Dr. Anuradha Harkare, madam. You deliver an insightful lecture on managing emotions and building a relation. Nowadays, it is very important part of our life. You shared with us very important points with great examples like emotional intelligence in the place of work, profession, family, and in the various relations. Our dialogues is very important. And really, ma'am, we need to think about our sentences when we talk with our children. The session was very informative and interesting. I would like to thank you, ma'am, on the behalf of our management, principal sir, and faculty for such excellent session. Also, I would like to thank our management, principal sir, faculty, and all the participants. Thank you all. Once again to management and Marathwada Mitra Mandal Pharmacy College and especially Kavita Yadav ma'am. And again, I just humbly request all of you to please subscribe my YouTube channel. Thank you so much. Ma'am, 1 minute. Yeah. Just start your videos so that we can take the screenshot. अभी जो मैंने दिखाया वो? No. I'm asking participants that start their videos so that okay. we can take a. Right. I got it. Yeah. Please stop your sharing. मैंने शेयरिंग चालू रखा है क्या अभी? ओके. या